Namaskar dosto and welcome to some Smart Profile Bank Nifty and Nifty analysis for 24th November 25 and for 25th November 25। हम 24th का वीडियो नहीं बना पाए थे फ्रेंड्स। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो चार्ट्स को यूज करके एक एरिया फाइंड आउट करते हैं अब्जॉर्प्शन का, एग्जॉशन का या ट्रैप्स का, और ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल को कंबाइन करके एक पॉसिबल ट्रेड डिसीजन कैसे लिया जा सकता है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम किसी भी टाइप की ट्रेड एडवाइस नहीं देते हैं। प्लीज यूज दिस वीडियो ओनली फॉर लर्निंग पर्पसेस एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। दोस्तों, मेरी टेलीग्राम चैनल पे कई हमारे दोस्तों से बात हुई। कईयों ने कहा कि हमें बिगिनर्स हैं, हमें मार्केट प्रोफाइल का थोड़ा बताइए कि कैसे काम करता है, ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है। इसके लिए मैंने पहले भी कहा है, देर इज वन बुक बाय जिम डाल्टन, माइंड ओवर मार्केट्स। उसको पढ़िए, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपको इन वीडियोस की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। बट हैविंग सेड दैट, ऑल्सो हम एक सेशन भी रख सकते हैं जिसमें हम आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो का देंगे। हमारे कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था एक संडे को सेशन करने के लिए जिसमें हम मार्केट प्रोफाइल की सेटिंग्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी की बताएं। हमने उनके साथ निफ्टी की सेटिंग शेयर की हैं, बैंक निफ्टी की सेटिंग शेयर की हैं, पर कई दोस्त उसको मिस कर गए हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड डोंट मिस आउट फॉर अपडेट्स एंड डोंट मिस आउट ऑन दी क्लासेस, राइट। अब चलो देखते हैं कि व्हाट हैपेंड ऑन 24th। दोस्तों, हमने 24th को देखा कि हल्की सी जो ओपनिंग है वो वैल्यू एरिया लो के बाहर हुई है 21st के। तो जब वैल्यू एरिया लो के बाहर या वैल्यू एरिया हाई के बाहर ओपनिंग होती है तो उसको हम आउट ऑफ बैलेंस ओपनिंग कहते हैं। तो दिस इज एन आउट ऑफ बैलेंस ओपनिंग। और दूसरा, ओपन होके मार्केट सीधा ऊपर गया, उसने एक ऑपोजिट रिस्पांस देखा बी पीरियड में और यहां से दोबारा एक हाई बनाया एंड इट वेंट फर्दर अप विदाउट गिविंग अस एनी मेजर range extension. Rather, it was a auction failure and the market came down uh, back to B period and even broke it, right? अब दोस्तों, जब ये मार्केट ऊपर गई यानी ये जब बी पीरियड बना था तभी एक पॉसिबिलिटी बन गई थी कि द मार्केट मे गो अप एंड then come down to complete this auction. So let the market kept going up and in E period उसने इस ledge पे, ये एक ledge है, this is an area, एक ledge पे इसने यहां से रिजेक्शन लिया ई पीरियड में, इसको करेक्ट नहीं कर पाए, ये एक पुअर हाई था, इसकी करेक्शन नहीं कर पाए और यहां से मार्केट वापस नीचे आई all the way in L period and K period and even in J period, rather in H period से ये शुरू हो गया था मार्केट का नीचे आना। I'll show you this in order flow also, and how early in the day we could come to know that the market will go up, meet an opposite activity, and try and come and repair the uh, poor low over here or the unfinished business over here. And that is exactly what happened. So much of consolidation, for more than 1.5 to 2 hours and then straight away down. So that is the beauty of market profile, and when it is combined with order flow, it gives even a better idea. Now let's see what happened today.
Where did the market open? It opened below the value area of the previous day, that is 24th November. So when it opens below the value area or above the value area high, then it's an out of balance opening. It did open out of balance below the value area, but it opened within the range of the previous day, because the range was this multiple volume profile POC, which has been defended since 17th November. A break of this volume POC with conviction will mean that there is a change in the structure, right? Okay, now where did the market open? As I said, it was an out of balance opening. What did the market do? It went up in the first 5 minutes, came down in the next 5 minute candles, tested the lower areas, right? And then went all the way up to make uh, give us an IB, which was a large IB, right? The market came down, C period and B period, again, the auction could not be completed. So it was expected that the market will come up and complete this auction. चाहे वो एक TPO इससे ऊपर जाए या दो TPO इससे ऊपर जाए, right? But this auction was incomplete. So if it was incomplete, the market has to come to complete this auction. This was our support. All we had to do was to look when the market will come over here, check with the order flow, take our opportunities, and wait till this period is taken out. And that exactly happened in the J period, and we met with an opposite activity in K period, और L period में हमें उसका follow through मिला. M period में we still closed within the value area of the day above this multiple volume POC, right? So multiple volume POC के ऊपर अभी क्लोज है, तो मेरा स्टांस अभी भी चेंज नहीं होता है. लेट अस सी कि what type of rotation factor we have. We have a rotation factor which is positive, which is +2, right? We and rotation factor के अलावा what do we have? What type of day is this? This is a neutral day. एक TPO नीचे है, एक TPO ऊपर है. This is a typical neutral day. वैल्यू एरिया हमारा शिफ्ट हुआ है कंपेयर टू 24th, कंपेयर टू 21st. We are still overlapping value area high and value area low of the previous day is also overlapping. Now we have a situation where we'll like to see what will happen on 26th when the market opens. If the market breaks this area with conviction, चाहे वो gap down opening हो and it is failure to come up, retest this area and go down again. So ये एक structure 1, 2, 3, 4, 5, 6 days का एक structure ब्रेक डाउन हो जाएगा जहां पे एक कंसोलिडेशन हो रहा था. But if this area holds and the market opens above this area and tries to retest the higher areas, then it is a different story altogether. Then again, we will see how order flow comes into place and what and where we have to do. And the structure will also remain the same. Consolidation for so many days at a stretch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days of consolidation in a particular area means that when now the market breaks, all the energy जो इसने gather किया है for a move outside, it is going to use. The longer the balance, the greater the potential move is going to be. ठीक है, तो अब 7 days से एक बैलेंस चल रहा है. अगर ये बैलेंस टूटा, it is going to be a good move. In which direction, that only time will tell. And let us see
the order flow, right? Order flow आज का, this was the 15-20 candle. This is it, this is it, this is it, this is it. Okay, like I said, पहली 5 minute candle, right? It opened above this area. यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे लॉट्स हैं, राइट? लेफ्ट हैंड साइड पे भी लॉट्स है, राइट हैंड साइड पे भी लॉट्स हैं. ये फिगर्स 5, 82, 4, 2, these are all the number of lots which have been traded at a particular point in the candle, right? Now, when the market went up, this candle was not very good. It came down, it retested. I immediately marked this candle. Which is this candle? This is the 925 candle. I immediately marked this candle to be an important candle, right? And after that, we can see that the market just moved up till this area, that is in the C period, right? C period में उसने let me show you here again. Yeah, the market came down, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद बी में सी में उसने एक अनफिनिश्ड बिजनेस और या एक पुअर हाई बनाया, बिकॉज बी एंड सी आर इक्वल, दे वर नॉट क्रॉस्ड. एक टीपीओ सी का ऊपर चला जाता तो बी का अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं रहता. बट सिंस दिस वाज एन अनफिनिश्ड बिजनेस, अ पुअर हाई, इट गिव कॉन्फिडेंस कि मार्केट अब जब नीचे आएगी ये एरिया से सपोर्ट देखेंगे और फिर एक पॉसिबल ट्रेडिंग डिसीजन लिया जा सकता है, राइट? सो व्हाट हैपेंड, द मार्केट केम डाउन, this is the area it came down to, right? And this becomes another trade opportunity after this. यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी एक और बनती है इस एरिया में. And as you can see, the market again went up, right? Before it met, again went up, and there was again a lot of consolidation in B, E, F, G, H, and I period before यहाँ पे ही घूमती. तो this was the right area to take a trade, and I don't think this area was ever broken, because we can mark this area like this. Let me give it a different color, dark green दे देते हैं इसको, and we'll come to know कि ये एरिया का रीटेस्ट हुआ था कि नहीं हुआ. The market just went going up till it broke and met with an opposite activity. I would have been more happy if it would have tested this area somewhere here or here and then come down. It would have been great, but it's okay. Expiry day था, कुछ भी होता है. यहाँ पे देखो उसने आके क्लोजिंग में इस एरिया को टेस्ट किया है, एंड वी आर स्टिल अबव दिस एरिया. एंड दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं, दैट इज 710 से ऊपर है, our structure is intact. We are not structurally going to break our 7 days of consolidation. बट अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये 696 707 एरिया जो है, अगर ये कन्विंसिंगली ब्रेक हो गया, then of course there is a break of structure and the market will use its energy in one direction, either above or below, right? 7 days of consolidation is a good enough consolidation. Market is waiting for some type of news. Let us see what happens tomorrow, and we will meet again to analyze if our analysis for the day has worked out well. Again, let me just sum it up for you. Any break below this and a continuation, right?
It shouldn't be, just break होके आया नीचे and then भाग गया ऊपर. No. A break with a continuation, a convincing break of this will mean a structural break, right? Until the time either this side or this side doesn't break, it is happy consolidation, right? Chalo, see you all. Trade with care. Define your risks before you define your profits. And bye bye.